Hello students, welcome. So today we will discuss electric lines of force. So electric lines of force is a path. Path mean it is a way और हिंदी में हम इसको रास्ता बोलते हैं. Electric lines of force is a path that can be straight or curved where unit positive charge may move, right, if it is allowed to do so. Mean इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पाथ है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है इफ़ इट इज़ अलाउड टू डू सो. हम ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो चार्जेस हैं दीज आर द स्टैटिक चार्जेस, यानी चार्जेस एट रेस्ट, सो दे डू नॉट मूव. बट इफ दे मूव, ठीक है, सो जिस रास्ते पे वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. मीन्स सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो if it is moving in this way, so this line is called the electric line of force. This can be here, it can go in this way, so this line can be curved. So that is why we have written here the path can be straight or curved. So the definition should be clear. Electric line of force is a path where unit positive charge may move if it is allowed to do so, right. Now one important property of electric line of force is tangent at any point of this path gives the direction of electric field, right. हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे मिलेगी? वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. टेंजेंट अगर आपके पास एक सर्कल है तो टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, राइट. सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली. अब सपोज करो हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डिफरेंट है इस पॉइंट की डायरेक्शन से, राइट. अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम यहाँ पे जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी इन दिस वे, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे कहीं भी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट. Now electric lines of force due to different charge system. First one we are discussing single charges like charge less than 0 means नेगेटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसी होंगी, और Q ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, राइट. सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it is represented like this one, radially outward. This is the electric field distribution for the charge greater than 0, that is for positive charge. In this way you can represent the electric field lines due to the negative charge. So नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट, here radially outward and here radially inward. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे. अगर आप देखें यहाँ पे चार्ज के जो अराउंड ये जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, ये स्पेस कम है, राइट. और यहाँ पे जो स्पेस है ये ज़्यादा है. ये जो स्पेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम चार्ज के दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी. सिमिलरली हियर यू कैन सी द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्मॉल, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर है. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी,
right? Now the next system we will discuss electric field due to the dipole. Electric field due to dipole. अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं. इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल मीन्स यहाँ की इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अपोजिट हो गए. इक्वल का मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, मीन्स यहाँ पे 5, अगर ये 5 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे ये भी 5 कूलम भी होगा, बट यहाँ पे जो साइन है वो माइनस में होगा, राइट, अपोजिट है. तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी? सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की है रेडियली आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट करेगी, राइट, और जो नेगेटिव चार्ज की है वो इनवर्ड है, राइट. सो इन दिस वे this is the electric field due to the dipole, right, and this electric field completely represented by this way. Electric field lines are emerging from the positive charge and ending at the negative charge. So this is the electric field distribution due to the dipole. Now if you are having two same charges, electric field due to same charges. Same charges means they can be positive positive or negative negative. So you know पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बट ये दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव. सो रिपल्शन होगी, सो रिपल्शन से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये टर्न कर जाएंगी इन दिस पे. सेम विल बी हियर. So electric field lines will turn like this one. अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, राइट. सो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विल कंप्लीटली cancel the electric field of this charge, right. So this point will be called here as the neutral. Similarly, you can draw the pattern of negative charges, negative negative, right. So negative charge की जो electric field है that is inward, right, in this way, but because now these two charges are equal charges, same charges, so they will repel each other. So इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको रिपेल करेगी. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से टर्न कर जाएंगी बोथ वेज. और यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट होगा वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस charge will completely cancel the electric field of this charge, and here it will be the neutral point here, right. So for the examination point of view, sorry, these are the inward lines are there. All inward. So for the examination point of view, it is important to remember the electric lines of force due to the single charges as well as dipole or as well as the charge distribution like positive positive or the negative negative. Now we will define one more term, that is uniform electric field.
So uniform electric field as the term represent uniform, yani this is the electric field where strength of a electric field does not vary. Strength of electric field does not vary. So uniform electric field is a field where the strength of electric field does not vary, यानी चेंज नहीं करेगी, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम we always represent this by the parallel lines. Whenever we will discuss uniform electric field, we will talk about uniform electric field, we will represent these lines by the parallel lines, right। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप किसी भी पॉइंट पे, बोले आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर ले या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर ले, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो वेरी नहीं करेगी, दोनों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी, राइट। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म लाइट, you know, students comes in the school uniform. Uniform mean they all have the same dress, right? So you can remember this uniform electric field in this way. The strength of electric field here does not vary, right? This is the 1 marks important question. Our next topic will be properties of some important properties of electric lines of force. Properties of electric lines of force. So we will discuss some important properties. First one is the electric field. Electric field lines are continuous. Electric field lines are continuous but not closed. This is the first one important property कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कंटिन्यूस तो है बट ये क्लोज्ड नहीं है, भाई। सो यू नो, जब मैंने डिस्कस किया था एक डाइपोल के केस में कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव, सो दे आर कंटिन्यूस बट नॉट क्लोज्ड। क्लोज कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, सो मैग्नेट के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द north to south outside, but inside they are from south to north. So north to south, south to north, तो ये तो क्लोज होगी, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस बट नॉट क्लोज बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो ये क्लोज नहीं है, राइट। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज द सेम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and end at नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पे, दैट इज वाई दे आर नॉट क्लोज्ड। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to surface of conductor. Electric field lines are perpendicular to surface of conductor. This is the third property. And last property, which is the very important, that is two electric field lines never cross each other.
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मैनी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, राइट? सो वी विल डिस्कस इट. Suppose you are having two electric lines of force like this one. This is the first electric lines of force, and we are taking another line here, and they are cutting like this way at this point, right? अब आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो हम वहाँ क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट? एक पी पॉइंट सपोज कर लिए, तो जब हमने इस लाइन पे, सपोज करो ये लाइन x1 है, x1 लाइन पे हमने इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करी, टेंजेंट ड्रॉ करके, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से आई E1 सपोज करो। नाउ अब हमारे पास एक सेकंड लाइन भी है, लेट इट बी x2। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पता कर रहे हैं टेंजेंट के थ्रू, तो ये E2 आ रही है, राइट? अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, राइट, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, उसकी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है? अब हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट P पे दो डायरेक्शन आ रही हैं, E1 एंड E2, विच इज नॉट पॉसिबल, right? So electric field lines never cross each other. So your answer should be कि if electric field lines cut, then there will be two directions of electric field. Two directions of electric field at the same point. If electric field line cut, then there will be two directions of electric field at the same point, which is not possible. Which is not possible because electric field is a vector quantity, right? So this is an important question here. Electric field lines never cross each other. So thank you very much. In the next video we will discuss electric field on axial as well as equatorial line. So thank you very much.